public streaming will start. Hey everyone, good evening. I hope you all are doing well. Firstly, thank you so much for joining in for today's session. I hope it will be a wonderful evening. Yeah, you might be thinking that it's a Saturday evening, so why we guys are here to just learn how to build a startup from zero to multi-million dollars. But I mean, it will surely gonna help you. I understand that in 1 hour you can't build a multi-million dollar startup or have those kind of executions that a person has spent hours and hours and years to get there, right? But this session particularly will surely help you to understand that how a person, how Vaibhav's journey has been in this particular arena, how he has started his own startup from the scratch without raising any funds, and how he built a brand out there, right? So this session will surely help you to understand that how you can move ahead in this particular direction. And there are so many people out there who want to become entrepreneurs. But even if you want to learn about entrepreneurship, even if you want to understand that how you can build that entrepreneurial spirit, that doesn't mean that you only want to become an entrepreneur. Just like many people say us that every person in their college days should do a startup or should become an entrepreneur, not because that founder tag is so amazing and cool, but it's all about that these startups, when you build a particular startup, that not only makes you a better entrepreneur but helps you become a better employee, right? So this knowledge is very important. So in today's session, we'll start in a while. And before this session starts, we have few activities for you. And we would love to understand from you that what you think about this particular idea, right? So can we move to the next slide? Perfect. So as you know, guys, that every entrepreneur who are out there, like most of the entrepreneurs, has to raise funds, right, from the investors. They have to convince them that, oh, our idea is one of the best, and you have to put your investment here, and we'll give you 5x, 10x, or 50x, 100x of it, right? So let's put you in that space, in the shoes of an investor, where you have to think that would you invest in this kind of an idea. So the first question that we have from you is that an app that helps you find a bro when you are drunk, right? So would you invest in this idea? Like Aris, I'll ask you, like, would you invest in this idea? I would love to understand from you first. I think so. I would definitely invest in this because it is such a creative idea, and you have to have an app which helps you find your brother like that. So it's a very creative and a unique, fun idea. So definitely. Okay, got it, got it. Krish says no in the chat box. Harshal says yes. Okay, I would love to listen to your ideas, like why you are saying yes or no. I would love to understand what are your reasons for the same. So it would be great if you all can also share your reasons that, oh, I don't think it's a good idea to invest here. So, all right, we have some mixed answers in the poll. We have 58% for yes. All right, 57 it is. Shara says, I think this is helpful. Artist Sriram says no. The Black Cat says no. All right. What about everyone else, guys? We need more engagement to start this session. This is an activity to make sure that you all are induced before the session starts and make sure that you all are excited enough to be a part of this particular session. All right. So let's not put more here, but let's start with the next question that we have. So can we move? Okay. All right. So as you know that artificial intelligence is a sector which is very boomed in this industry, and this industry is growing each and every day. So would you invest in a startup where the idea is that an AI that can pick calls of your family? So I won't say that this would go with everyone out there, because like everyone love to pick their family's call, but sometimes it can be annoying, or maybe you are in a moment where you don't have to tell your family that, hey, I'm just partying at night and I haven't slept here, right? So would you invest in this idea? Again, Aris, my friend, I would love to answer. I need your answer, and then we'll move on to the chat box answers that we have. Right. So, yes, again, I would, because I get it. You need to talk to your family, but sometimes there has to be a little bit of lying, a little bit of sneaking out where you won't be able to pick up your calls. And especially with the background noises, they're going to figure out where you are. So, if AI is there and can talk in my voice and can answer clearly, definitely I'm going to invest in this idea. Amazing. But this also comes with very banes also, like somehow AI can also like make things worse for you. But yeah, I mean, that's surely an amazing idea. All right, let's see the chat box answer. So the Black Cat says, no, I don't trust AI to talk to my parents. Okay. Then we have a yes. Then we have some no. It's mixed. King's Kill says this is a brilliant idea. Nishi says yes.
All right, amazing answers. Let's move to the next question. Okay, so the third idea where you have to put your answers is the college where you get to build careers in unconventional fields, and you don't need to give any exam for admission. As you know that getting into a college is a hustle now, right? It's not easy to get into good colleges, and when you actually land up in those colleges after working hard for these exams, competitive exams, scoring in them 99 percentile and more, that then you figure out and then you got to know that, oh, the college for which I was preparing for, there is nothing special to it. It's all about the brand name it has. So, what do you think, Aris, about this? Yes, again, this is also a very good startup idea. Especially many children are unsure of what they want to do. They struggle so much just for preparing for that. They neglect everything else. So this will be very beneficial, especially, when there's no need for any admission for an exam and you can like focus on other skills and other part of it. True. Because obviously the skills that you build outside your college, that actually helps you stand out of the crowd, and that is surely helps you in your placements and get a job or an internship, which will surely help you in your career path. Shora says a big yes, depends on the placements also. Yeah, placements is the biggest part through which this whole arena of college admissions are working on. So obviously placements are very necessary. Trish says yes, I'd like to invest as I'll check skills rather than scores. So that's a very good point. All right, let's move to the next part. All right, so let's move on to the next activity. Can we move to the next slide? All right, so this particular activity is that would you give it a try? And let's move to the first thing. All right, if Apple starts selling fruits, so would you give it a try? And also, I need your answers, not only yes or no, but I want to understand according to you. If Apple is selling fruits, so what kind of technology Apple can bring there? You know, Apple is a market leader of all these things, right? So what do you think that if Apple would start selling these things, so how it will come out and how it will help our global and all the other industry? What do you think, Aris? So this one's actually a little bit tricky. I don't know whether it's a yes or no, but it would be a fun thing. Apple starts. Maybe I would give it a try. I'm not sure whether I would like it or not, but it's a very funny thing. So yeah. Just like iPhone 13, 14, 15 series, these people gonna again start moving the Apple's shape and few things and just keep it same. All right. So we have okay. Someone says Apple will die. Someone says yes because they can monitor fruits quality. All right. That's a very genuine point, and obviously Apple can do that. King says no because it's going to be expensive, but need to try. Yeah, obviously we should give it a shot. And Apple with titanium wax. All right. Amazing answers. Let's move on to the next slide. Okay, if Google decides to manufacture washing machines, what do you think? What kind of technology they can have, and would you give it a try? Ronak says instead of Apple, give them cable. All right. If you're asking for a cable, then trust me, you won't get it. So you can only get the fruit, even if you need it, but nothing else. All right. We are having more answers now. It would definitely affect the normal vendors and other online apps. Yeah, obviously, if a market leader who has a super amazing distribution out there, it will surely affect the retailers out there who actually keep their home. All right. Deepa says Google will use Google Home. All right. Might Alexa be inbuilt? Okay, that's an amazing point. If AI can help us clean our clothes, then that's a win-win for both of us. Okay, Draken says yes, they would most probably be more useful than the normal washing machines. The washing machine will sell to the market greatly as Google is so famous and trustable. Amazing answers, guys. Okay, it's good to see that you have a good global knowledge and you understand that how these brands work and what kind of technologies they can bring in. I hope that this session will surely be helpful for you. Can we move to the next slide? Okay, if Patanjali launches cement, yeah, this cement is, you don't have to apply it on your face, but yeah, it's actually that cement only. So Aris, what do you think? Like, what kind of technology Baba Ramdev can bring in here? So I don't know. Maybe it can be beneficial actually because Patanjali it's used for its low cost and all of that. So maybe if the cement is cheap and
it's durable, it's good again, like all the other products, maybe then I would definitely give it a try. Great. Okay, Alok says cement dant kanti. That's actually amazing. All right, organic. Imagine Ayurvedic cement. All right. Someone says flexible cement. Okay, amazing answers. Good creativity. Okay, there are a few people who don't trust Patanjali already, so it's big no. But yeah, there are 65% people who won't give it a try. All right, let's move to our the last activity for before we start this session. And I hope that you all will have fun, right? So I hope you all have seen Shark Tank, right? So let's move to the next slide. I would love to know if you can guess this Shark Tank judge, right? And I'll just put a caption from it. So, bhai kya kar raha hai tu? I guess you all might have listened to some of the judge. So, what do you think? Who's this judge? I would love to understand if you guys have actually seen the Shark Tank or not. All right. Chris says Ashneer. Alok says Ashneer Grover. Okay. So, okay. Someone says Ashwin Grover. Okay. Even I am also figuring out that when he got appointed as a judge. But yeah, okay. So many answers for Ashneer. Let's reveal the answer. And you guys are correct. You guys won. It's Ashneer Grover. Let's move to the next one. Okay. ये मेरी expertise नहीं है. आपके हिसाब से किसने बोला था ये? Okay, people have started also commenting Doglapan. Yeah, we know that that's the signature symbol of Ashneer now. But what about everyone else? All right, we are having some answers. Okay, someone says Namita, someone says Grover. Okay. All right. We need more answers, guys. Would love to understand so that we can just start the session super fast. Okay, Namita Thapar. Okay, Namita. All right, let's reveal the answers. We have so many options in the chat box, and yes, you guys are right. Let's move on to the last one. Okay, I guess that you will not be able to get the answers so easily because it's not a very famous one. But yeah, the question is जरा सरल तरीके से समझाइए. Whom do you think is the answer? Okay, we would be needing more answers in the chat box. The beer one who's so polite. All right, good way of telling that who's the person. Okay, someone says Ashish Chanchalani. Great. I have also seen the spoof. Okay, someone says Anupam, Piyush, Muskan. All right, let's reveal the answer, and it's Anupam Mittal. All right, so we are done with the activities, and also keeping the time constraints in mind, we also have the mentor with us here. Welcome, Vaibhav. Good evening, and thank you so much for joining this particular session. So let's we have a small introduction for you. So hello, everyone. Thank you so much for joining the session. We are thrilled to have Vaibhav Kanwar with us today as a mentor. Vaibhav is founder and CEO of Clapbox, took a remarkable journey from a middle-class background to building a powerhouse brand without raising any funds. Clapbox is now India's largest percussion brand and boasts an annual revenue in the nine figures. Having said that, Vaibhav has also been a TEDx speaker. Today, Vaibhav will guide us on the simple yet powerful theme of building from zero to multi-million-dollar startup. Let's give him a warm welcome in the chat box and make this session as energetic as his incredible success story. Thank you so much, Vaibhav, for joining in. The stage is yours. Hi, Vaibhav. Yeah. Hi, Gaurav. Thank you for such a beautiful introduction. And guys, if I'm audible and if I'm visible to you, please drop in a thumbs up in the chat section. That would be very helpful. All right. We have an amazing welcome in the chat box. Lovely, lovely. Great, great. So happy to see so many thumbs up. A couple of thumbs downs also, but that's okay. Hanji. Great. So I Thank feel you. we can start with the Yes. session. I hope yeah, the voice is perfectly audible and you're visible. So let's start the session, and everyone is very excited to
learn from you in the next 1 hour. So would love to listen to Thank your you. expertise and experience. Thank you. Greetings and welcome, everyone. Welcome to our online session on starting your own entrepreneurial journey. I'm so excited to have so many students with us from all over the country. Your interest in learning about business is absolutely fantastic. My name is Vaibhav Kanwar, and I'm happy to guide you through today's talk about starting a business. Um, I mean, क्लियरली आप लोग मेरे से ज्यादा स्मार्ट हो, क्योंकि अपने स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में मैंने ऐसे कोई सेमिनार्स ज्यादा अटेंड करने की इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली फॉर दैट मैटर, बट यू गाइस हैव टेकन दैट फर्स्ट स्टेप, सो kudos to you. मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको पहले बताऊंगा फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ मिनट्स, एंड देन वील यू नो सो दैट यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट मी, माय बैकग्राउंड. आप हम लोग एक दूसरे को थोड़ा जान सके. सो आई एम अ 26-year-old serial entrepreneur. मैंने सो व्हाट इज अ serial entrepreneur? एक ऐसा जना जो एक के बाद एक बिजनेसेस बिल्ड करता है. मैं एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाता हूँ जिसे क्लैपबॉक्स कहते हैं. मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टर हूँ, और मेरा एक नया बिजनेस आ रहा है म्यूजिक क्लास करके, जिसमें हम एक एडटेक म्यूजिक लर्निंग प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं. आई एम गोना टॉक अबाउट इट सम टाइम लेटर ड्यूरिंग दिस सेशन. तो हाउ अबाउट वी स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. मैं थोड़ा सा डिटेल देता हूँ अपने बारे में, ताकि यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट मी. एज अ बटिंग एंटरप्रेन्योर बैक इन माय कॉलेज डेज, मुझे ना ऐसे स्पीकर सेशंस अटेंड करना बहुत पसंद था. तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है. एज आई वुड ऑलवेज लर्न समथिंग आउट ऑफ दीज सेशंस. मैं हर हर स्पीकर सेशन जो भी मैं अटेंड करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था. हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था. मैंने बहुत सारी टॉक्स अटेंड करी, बट उसमें से एक पर्टिकुलर टॉक थी जो मेरी बिल्कुल फेवरेट निकली. ये जो स्पीकर थे उस दिन, ये एक 16 टाइम्स टेडेक्स स्पीकर थे, और इनफॉर्मली इनको बोला जाता है एशियाज मोस्ट क्रिएटिव स्पीकर. उनकी टॉक देखकर आई मीन हिज वर्ड्स जस्ट ब्लू माय माइंड. ही वाज अ मार्केटिंग जीनियस, और उस टाइम पे ना मेरे पास एक बिजनेस आइडिया था जो कि मैं स्टार्ट करना चाहता था. For someone like me who was desperately looking for that one mentor to help me in my entrepreneurial journey, I decided to speak to him after the event. जैसे इवेंट खत्म हुआ, मैं उनके पास गया, लेकिन मेरे से पहले ना लाइन में करीब 50 बच्चे लगे हुए थे उनसे बात करने के लिए. जैसे ही मेरी बारी आई 1 घंटे बाद, he looked at me and he said, dude, I have to leave. मेरे को कहीं जाना है. I said, sir, I've been waiting for over an hour. I'll just take less than a minute. Please help me. There's this business that I want to start. He said, dude, just drop me a text on LinkedIn. I'll revert that. I did what he said, but unfortunately, उन्होंने कभी respond ही नहीं करा LinkedIn पे. I was quite disheartened. I mean, as an 18-year-old, as a 19-year-old budding entrepreneur, कि यार, I wish उनसे बात करने का chance मिलता, but I also understood that we cannot take people's time for granted. Finding a mentor is not that easy, right? But deep down, I was sure that someday, sometime, somewhere, I would definitely find that one mentor who would help me discover my passion and give me the direction. Uh, बचपन में ना, जब मैं 4th ग्रेड में था, हमारी क्लास टीचर थी अंजू मैम करके. वो आई और उन्होंने कहा, बच्चों, यार बताओ, बड़े होके तुम क्या बनना चाहते हो? माय फ्रेंड्स वांटेड टू बिकम डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड इंजीनियर्स. जैसी मेरी बारी आई, आई गॉट अप एंड आई सेड, मैम, आई वांट टू बिकम अ शॉपकीपर. एंड एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग कि यार इसको क्या दुकानदार बनना है. शी सेड, Vaibhav, who inspired you the most? I said, ma'am, my favorite shopkeeper is Mukesh Ambani. And everyone started laughing. While back then I couldn't understand as to why everyone was laughing, but this does goes to tell you that my 10-year-old self was very much fascinated by the world of business. At 13, I discovered my passion for drumming and joined the music club of my school.
जब स्कूल खत्म हुआ, आई वाज सिंस आई वाज ऑलवेज fascinated by the world of business. I decided to start my first two businesses at the age of 18 and 19. But as luck would have it, I miserably failed at those two businesses and I lost a lot of money. अब पता है, म्यूजिक वाज माय एस्केप फ्रॉम एवरीथिंग दैट वाज नॉट वर्किंग इन माय बिजनेसेस. एंड जब मैं सेकंड ईयर आया कॉलेज में, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग गाइस, आई होप यू आर लिसनिंग टू मी. प्लीज ड्रॉप इन अ थम्स अप इफ यू आर ऑल हियर विद मी राइट नाउ. सो जब सेकंड ईयर आया कॉलेज का, एक दिन मेरी म्यूजिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट आया मेरे पास एंड उसने मुझे बोला कि वैभव भाई, तेरे को याद है ना, तेरे को अपने साथ अपनी ड्रम किट कैरी करनी है कानपुर, हमको परफॉर्म कर रहा है वहां जाके. मैंने कहा भाई तू कैसी बातें कर रहा है यार, हैव यू लॉस्ट योर माइंड, हाउ कैन आई कैरी माय ड्रम किट इन अ ट्रेन ऑल द वे टू कानपुर. ही सेड यार ऐसे मत बोल, हम सब परफॉर्म नहीं कर पाएंगे वहां पे, कंपटीशन में परफॉर्म करना है हमको. और मेरे को नाइटमेयर आ रहा था कि यार कैसे मैं अपनी पूरी ड्रम किट उठा के लेके जाऊं. तो एक बैंड मेंबर ने सजेस्ट किया कि वैभव आई थिंक यू शुड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट जिसे काहन बोलते हैं. एंड ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग कि इट लुक्स लाइक अ स्टूल, यू हैव टू सिट ऑन इट एंड बीट ऑन टू इट टू प्रोड्यूस अ ड्रम बीट. आई थॉट इट वाज अ ब्रिलियंट आइडिया. तो मैंने क्या किया, मैं म्यूजिक स्टोर्स गया काहन ढूंढने अपने लिए. बट काहन्स वर सो एक्सपेंसिव इन द मार्केट कि एक हफ्ता पूरी दिल्ली के सब म्यूजिक स्टोर्स विजिट करने के बाद आई केम बैक होम एम्प्टी हैंडेड. So they were so expensive. I remember having this conversation with the shopkeeper. जब मैंने उनके पास एक काहन था, मैंने ट्राई करा और मुझे उसकी टोन बिल्कुल पसंद नहीं आई. So he said, बेटा आप टेंशन मत लो, आई नो आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, मैं आपको सिर्फ 25,000 रुपए में दे दूंगा ये. एंड मेरे पास उस टाइम पे, कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे इतना ज्यादा एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए. आई वॉज डिसअपॉइंटेड और मैंने सोचा यार अब तो मैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाऊंगा, कोई चांस ही नहीं है. बट दैट नाइट आई कुड नॉट स्लीप. I had that guilt inside me that because of me, my entire band would not be able to participate in that event. बस यही सोच रहा था कि यार कहीं से कुछ जुगाड़ हो जाए और ये इंस्ट्रूमेंट अरेंज हो जाए कहीं ना कहीं से. एंड दैट्स व्हेन आइडिया स्ट्रक. आई डिसाइडेड टू बिल्ड वन फॉर माई सेल्फ. बड़ा क्रेजी थॉट था, बट मैंने सोचा यार डेस्परेशन इतनी थी और आई जस्ट वांटेड इट बाय हुक और बाय क्रुक. मैंने अपने लिए सोचा मैं बनाता हूँ. तो मैं दो तीन ऐसे कारपेंटर्स हायर करे और उनके साथ मैं एक हफ्ता बैठा. हमने काहन बनाना स्टार्ट करा. तीन चार प्रोटोटाइप्स बनाए, दे वर नॉट गुड. बट जो फिफ्थ वाला बनाया ना, इट साउंडेड नाइस. और उसको मैंने पेंट कराया अपने फेवरेट चटक रेड कलर में. अब इस उस इंस्ट्रूमेंट, वैसे अभी भी मैंने चटक रेड कलर ही पहना है. बट सो यू नो हाउ मच आई वाज इन लव विद दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट दैट आई मेड ऑल बाय माय सेल्फ. जब उस इंस्ट्रूमेंट लेकर मैं परफॉर्म किया स्टेज पे, और मैं जैसे ही उतरा स्टेज से, आई हैड टू म्यूजिशियंस वॉक अप टू मी एंड दे सेड, भाई जब आप इसको स्टेज पे लेके जा रहे थे ना, बहुत ज्यादा हम हंस रहे थे कि यार आप कैसा सा इंस्ट्रूमेंट लेके जा रहे हो, हम सब अपनी प्रोफेशनल ड्रम किट्स लेके आए हैं. बट व्हेन यू स्टार्टेड प्लेइंग इट, इट साउंडेड सो नाइस. यार भाई हमको भी ना काहन खरीदना है, लेकिन मार्केट में इतने एक्सपेंसिव है, हम अपनी ड्रम किट्स ना कैरी नहीं कर सकते हर जगह. तो आप बताओ आपने कहाँ से लिया. आई टुक अ पॉज. आई looked him in the eye and I said, dude, I make these. Buy from me. Well, that is how my business journey started. The next thing I know, I was bombarded with calls from their friends. Someone wanted me to build a kahan for them in blue color. Someone wanted me to build a kahan for them in green color. इनफैक्ट एक बड़ा ही अजीब सा मेरे को कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट आई. उनका मुझे कॉल आया और उन्होंने बोला, वैभव भाई, कैन यू प्लीज प्रिंट द पिक्चर ऑफ माय फेस on the front part of the cajon. I mean, I said नहीं भाई, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा. You have to beat on it to play it. ऐसा लगेगा that you are slapping yourself. That's a terrible idea. So jokes apart, अब ये तो समझ आ गया था कि एक बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है. पर प्रॉब्लम ये थी कि अभी ना हम जुगाड़ू काहन्स बना रहे थे. एंड आई मीन इवन दो इट वाज अ फुल फ्लेजेड substitute to an I mean substitute to a full fledged drum kit,
और मार्केट पोटेंशियल था, बट समझ नहीं आ रहा था यार इसको कैसे बिल्ड करना है। और पता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि अगर मुझे एक बड़ा बिजनेस बनाना था, मुझे गाइडेंस चाहिए थी। आई नीडेड मेंटोरशिप, और मुझे कोई मेंटोर मिल ही नहीं रहा था कहीं पे भी। आई टोल्ड यू आई वाज जस्ट लेफ्ट राइट सेंटर ट्राइंग टू नेटवर्क विद पीपल, ट्राइंग टू अटेंड events, seminars, workshops, just trying to find that one mentor or those couple of mentors who can help me in that journey. But I decided to take it in my own hands. अब जो मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी वो था कि एक बिजनेस बनाने के लिए सबसे पहले तो प्रोडक्ट परफेक्ट चाहिए था, क्योंकि हम अभी जुगाड़ू का हाउस बना रहे थे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज करनी थी वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, और वो ये था दैट आई वांटेड टू एंश्योर दैट kahons were available at a very affordable price point in the market now. I did not want anyone to go through what I had to go through as a college student or maybe as a school student, because I felt that money should not be a constraint to acquiring a new talent. Huh. So as a part of the process of building this instrument, with whatever money I was making through selling these Jugadu kahans, I was putting it into making a new prototype and sending it to a group of professional musicians in my circle to get a feedback from them. With every feedback that we got, हम product improve करते गए एक के बाद एक के बाद एक। 60 prototypes later and 6 months later, मैंने बहुत ही खुशी से अपना एक परफेक्ट काहन लॉन्च करा, और अब टाइम था इसको नाम देने का, ब्रांड नेम। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट अ ब्रांड नेम इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि इस टाइम तक मैं ब्रांड नेम रखना ही भूल गया था, मैं सिर्फ प्रोडक्ट बिल्ड करने बैठा था। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक क्रिएटिंग अ ब्रांड नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट? गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स प्लीज। ग्रेट ग्रेट, लवली, थैंक यू फॉर बीइंग सो रिस्पॉन्सिव गाइस। तो जब मैं कहा ब्रांड नेम रखने बैठा तो समझ में आया कि यार इसकी एक और प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। सो द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज cajon. इट्स अ स्पेनिश वर्ड एंड द वे यू प्रोनाउंस इट इज, आई मीन द वे यू स्पेल इट इज CAJON, जिसमें जे को एच की तरह प्रोनाउंस किया जाता है। बट बहुत सारे लोग इसको इंडिया में ना कैजॉन बुला रहे थे, एंड आई वांटेड टू चेंज समथिंग अबाउट इट। तो मैंने सोचा यार आई वांट टू कम अप विद समथिंग दैट्स हैप्पी साउंडिंग एंड दैट हैज अ पॉजिटिव वाइब टू इट। काफी सारे ब्रांड नेम्स आए दिमाग में, स्लैप बॉक्स, हिट बॉक्स, पर ये सब बहुत वायलेंट थे। फिर मैंने नाम रखा इसका क्लैप बॉक्स, एंड आई थॉट इट वाज द परफेक्ट नेम, काफी हैप्पी वाइब देता है। एंड आई वाज देयर विद द परफेक्ट प्रोडक्ट, परफेक्ट ब्रांड नेम। नाउ वाज द टाइम टू हार्ड सेल इट टू म्यूजिक स्टोर्स। यार इन सबको अप्रोच करना बहुत मुश्किल हो रहा था बिकॉज ऑफ अ कपल ऑफ रीजंस। नंबर वन, आई वाज वेरी यंग। नंबर टू, आई हैड नो एक्सपीरियंस। मेरे को कहीं पे भी मेंटोर नहीं मिल रहा था, कहीं से भी हेल्प नहीं मिल रही थी कि मैं कैसे एक ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिल्ड करूं। एंड whichever music store that I went to, everyone just outrightly refused to buy from me. They said, "Vaibhav, product अच्छा है, but look at you. You are a kid. You are a 20-year-old student trying to sell us something, even though the product is good, but we will not buy it." And the reason? Again, you're so young. Tomorrow, if you stop taking our calls or shut down the business, who is going to fulfill your promise of the warranty and after sales service that we commit to our end customers? Now, this was quite heartbreaking for me. I knew that I definitely would not be able to pay off the salaries of my employees by selling 2 to 3 kahons a day purely on the basis of word of mouth. I just did not know what to do. मेरे पेरेंट्स बहुत मुझे पुश कर रहे थे कि वैभव, वी थिंक यू शुड पिक अप अ जॉब एंड जॉब सिक्योरिटी एंड पंजाबी पेरेंट्स बीइंग सो एडमेंट अबाउट यू हैविंग अ स्टेबल करियर कि एवरी मंथ पे चेक तो आएगा यार कम से कम। बिजनेस में तो यार पता ही नहीं प्रॉफिट होते हैं, लॉसेस होते हैं। हाँ, but deep down I knew that I had to follow my passion, which is actually the combination of two things I love the most: music and entrepreneurship. Ah, I just did not want to give up at all.
I was constantly thinking of ways to make things work. Well, a lot of young entrepreneurs give up very early on the game of business when things are not working for them. हमको ना ये समझना चाहिए कि पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तुम लोग बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो और तुमको लग रहा है यार मैं तुम्हें 200 करोड़ कमा के दे दूंगा 1 घंटे में, ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। if you're building a house, it's okay to be impatient, but if you want to build an entire empire, you have to be extremely patient. As a matter of fact, there is nothing known as overnight success. Well, for me this time, I was so much in love with the problem that I was solving, giving up just did not seem like an option. I decided to learn to sell. मैंने बुक्स पढ़नी स्टार्ट करी सेल्स एंड मार्केटिंग पे, मैंने वर्कशॉप्स अटेंड करनी स्टार्ट करी। और इसी प्रोसेस में ना, as luck would have it, I ended up attending a workshop. Listen to this very carefully, क्योंकि काफी एक turning point था मेरी लाइफ में। I attended this workshop being conducted by a 29-year-old entrepreneur who is doing 30 crores in annual turnover by selling stuff on e-commerce portals. That guy was amazing. उन्होंने हमें इतनी सारी ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड सिखाई 2 घंटे की वर्कशॉप में कि मजा आ गया। एंड फॉर्चुनेटली, जैसे मेरी आदत थी, मैं मेंटोर ढूंढ रहा था, मैं उनके पास गया उनसे बात करने इवेंट के बाद। इस बार थैंकफुली मैं लाइन में बहुत आगे लगा था। मैंने उनको थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में समझाया और मैंने कहा सर मैं ना आपसे सीखना चाहता हूँ, नोबडी इज जस्ट विलिंग टू हेल्प मी, आप मुझे बताओ मैं क्या करूँ। So this guy was so kind. He said, "Vaibhav, come down to my office and we'll talk there." एक हफ्ते बाद मैं उनके ऑफिस गया एंड मैंने उनको पूरा डिटेल में समझाया, सर मैंने ऐसे ऐसे बिजनेस स्टार्ट करा है, मेरे को ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझ आ रही, ऑनलाइन सेल्स के बारे में मैं समझना चाहता हूँ। आई वांट टू सेल माय प्रोडक्ट्स ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट, लॉट ऑफ ई कॉमर्स पोर्टल्स। you've been there, done that, आप मुझे बताओ what is the way to go about it. So he started thinking and he said, Vaibhav, how about you work with me as an intern for 2 months? I said, sir, I would love to do that, but मैं एक internship में आपके लिए क्या कर सकता हूँ? He said, nothing really, but तू आना साथ बैठ and learn from me. Learn from me. Sit with me for the next 2 months. देख मैं दिन में किस किस से मीटिंग अटेंड करता हूँ. Feel free to go to the packaging department, logistics department, the sales team, and learn as much as you can from every single person and make the most of your time here in the next 2 months. Who is a mentor, guys? Who is a mentor? Can we have your answers in the comment section, please? Who do you think is a mentor? I need short answers. Okay, let me tell you. A mentor is someone who has already walked the path that you want to walk on and who can help you actively speed up your process and help you drastically shorten the part that you're taking. Guys, just hold on for a second. मैं टेक्निकलिटीज में बहुत जल्दी घुसूंगा, डोंट वरी। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल here are getting slightly impatient and restless. I'm just gonna cover everything in the next 30-40 minutes. Don't worry, we'll get into the technicalities very soon as in the next 10 minutes, less than 10 minutes, I promise you. So a mentor is someone who's already walked the path that you want to work on and who can help you actively speed up the process and help you drastically shorten the path that you're taking. इसका मतलब ये है कि अगर आप पॉइंट ए पे हो और आपको पॉइंट बी पे जाना है, पॉइंट ए बीइंग वेयर यू आर राइट नाउ, पॉइंट बी बीइंग वेयर इज इट दैट यू वांट टू बी, एक स्पेसिफिक टाइमलाइन में। अगर आप खुद करने बैठोगे तो हो सकता है उसको 2-3-4-5 साल लग जाए, बट इफ यू हैव अ मेंटोर, वो आपका पाथ, वो टाइमलाइन ड्रास्टिकली शॉर्टन कर सकता है। दैट्स बिकॉज ही विल इंश्योर कि उस मेंटोर ने अपनी पूरी जर्नी में जितनी मिस्टेक्स करी, वो इंश्योर करे दैट यू डू नॉट मेक दोज मिस्टेक्स। ही विल मेक श्योर कि आप वो मिस्टेक्स ना दोहराओ जो उन्होंने अपनी जर्नी में करी। और
ये आपका जो ड्यूरेशन है ना, टाइमलाइन, वो ड्रास्टिकली शॉर्टन कर देता है. नॉट ओनली दिस, एक मेंटोर की होने से आपको सपोर्ट मिलता है. यू हैव अ गाइड, यू हैव अ कोच who you can rely on, who you can just call, text for support, for networks. You know, a network has a mentor has crazy network that he can really help you and you can leverage. Let me tell you how my mentor helped me. My learnings from him combined with my extreme hard work. Again, I was patient, little patient for the next 6 months. 6 महीने बाद हम लोग इंडिया में सारे ई कॉमर्स पोर्टल्स पे बेस्ट सेलिंग काहन ब्रांड बन गए. We were the best selling Kahan brand on all e-commerce portals only in 6 months. I kid you not, guys. It was only and only because of my mentor कि मैं 6 महीने में इंडिया का सबसे बड़ा काहन ब्रांड खड़ा कर पाया. एक मल्टी मल्टी करोड़ काहन ब्रांड. अगर मैं वो खुद करने बैठता ना, तो मेरे को एटलीस्ट 3 4 या 5 साल लग जाते. ये मैं ओपनली बोलता हूँ. जहां पे भी जाता हूँ मैं ये ओपनली बोलता हूँ. Well, I was fortunate enough to have that one mentor in my life. After trying my hands on getting in touch with so many mentors. जैसे ही हम लोग काहन के बेस्ट सेलर्स बने ई कॉमर्स पोर्टल पे, हमें म्यूजिक स्टोर्स के कॉल आने स्टार्ट हो गए कि बेटा हमारे पास ना एक एक करके कस्टमर्स आ रहे हैं. मेरे को सब बेटा बेटा करके ही बुलाते थे बिकॉज आई वाज 20 years old back then. हमारे पास एक एक करके कस्टमर्स आ रहे हैं और वो आके बोल रहे हैं सर हमको ना क्लैप बॉक्स चाहिए. और हम परेशान हो गए उनको बोल के कि इसका नाम कैजॉन है, क्लैप बॉक्स नहीं है. सीरियसली व्हाट वाज हैपनिंग, सिर्फ 6 महीने में जो ब्रांड नेम था क्लैप बॉक्स, वो सिनोनिमस बन रहा था प्रोडक्ट के जेनेरिक नेम से, काहॉन से. Just how Google is to search engines, Xerox is to photocopying machines, and how Colgate is now become to, toothpastes. That is what was happening. हम ऐसे बोलते हैं ना यार गूगल कर लेना, नहीं पता यार ये 2 पेपर जेरोक्स करा के ले आ, अंकल मेरे को क्लैप बॉक्स चाहिए. दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग. दैट वाज द लेवल ऑफ ब्रांडिंग वी हैड डन only and only because my mentor taught me what to do. That's how my offline distribution started. 5 more months down the line, जब मैं at the age of 20 अपने final semester exams लिख रहा था कॉलेज में, you won't believe. Okay, so again guys, I'm gonna throw a figure at you. The idea is not to brag about the money that I made as a 20-year-old kid, but to motivate you guys. That's the only pure intention I have right now. जब मैं अपना फाइनल सेमेस्टर एग्जाम दे रहा था, हमने उस साल when I was 20 years old 3.5 crores का टर्नओवर करा था. उस बात को आज 6 साल हो गए हैं. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बिजनेस मैनी फोल्ड इंक्रीज हो गया है. हम लोग इंडिया में बिगेस्ट परकर्शन इंस्ट्रूमेंट ब्रांड है. परकर्शन इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, मैं समझा देता हूँ. परकर्शन इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जिनको आपको बीट करना पड़ता है साउंड निकालने के लिए, जैसे ड्रम्स, काहॉन्स, दरबुकास, जेम्बेस. So we became the biggest percussion brand in the country, and but what helps us maintain our position is, I feel, it's innovation. Innovation एक magical bond की तरह work करती है, especially if it's solving a new problem. So I think one lesson that you get out of this, my story, is definitely that innovation is very important, patience is very important, and a mentor is very important. But before I get on to mentor, I mean, we dive deep into how a mentor can further help you. I want to tell you about this one life incident that happened. It's very personal to me. Meko, it's a very important incident that happened in my life. Uh, जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, मेरे को एक के बाद एक कॉल्स आने स्टार्ट हुए बिजनेस कॉलेजेस से, आईआईएम से, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, स्कूल से. एंड मैंने आज तक 200+ टॉक्स डिलीवर करी है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. बट एक इसमें से एक ऐसा इनवाइट था, एक ऐसी टॉक थी विच टर्न्ड आउट टू बी माय फेवरेट वन. मेरे को एक कॉलेज से कॉल आया और उन्होंने बोला, वैभव, वी आर कंडक्टिंग इंडियाज बिगेस्ट एंटरप्रेन्योरियल समिट. 4,000 लोग होने वाले ऑडियंस में.
आपके को स्पीकर एक फॉर्च्यून 500 के कंपनी के सीईओ हैं, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं और एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप आओगे, एंड वील बी ऑनर टू हैव यू एज वन ऑफ द स्पीकर्स, की नोट स्पीकर्स। इनफैक्ट हमारे पास ना इस बार एक बड़ा पॉपुलर, बहुत रिनाउंड होस्ट है, और उन्होंने मुझे होस्ट का नाम बताया। अब होस्ट का नाम मुझे बहुत सुना हुआ लग रहा था, बट याद नहीं आ रहा था मैंने कहाँ सुना है। सो ही further stated, Vaibhav, he's a very popular business coach and also known as Asia's most creative speaker. So if you guys have been attending my talk from the start, you would know that this was the same guy who had refused to speak to me exactly 1 year back. Let me tell you how he introduced me on the stage. He said, "Ladies and gentlemen, we have the best of people to deliver a talk to today, but my favorite speaker is the one I'm going to introduce on the stage next. That's because I use all his products. Can we please have a huge round of applause for the percussion king of the country, Mr. Vaibhav Kanwar, on the stage?" That's how life turned, guys. And I'm very grateful to God. I'm very grateful to all my mentors who have helped me in my paths, helped Clapbox becoming a multi million dollar company today. So just please drop in a thumbs up if you liked my story. And थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, because there's something quite interesting that's coming ahead for you guys. Thank you, thank you, thank you for so many thumbs up. That really means a lot to me. You know, thank you. Oh, I got a star also. Lovely. Thank you. Stars तो आप लोग हो यार. You guys are the stars. आप अटेंड कर रहे हो सेमिनार यार. मैं तो अपने स्कूल कॉलेज में, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी सेमिनार अटेंड करने की. So, moving ahead, guys, I think, um, again, what are the qualities of an entrepreneur? Creativity, resilience, adaptability, determination, vision, and the list goes on and on. The list goes on and on and on. But एक entrepreneur सीखता कैसे है? मैं अपनी लाइफ का पूरा क्रेडिट अपने मेंटोर्स को देता हूँ. But you know what is the problem? Finding a mentor is extremely difficult. I told you about my experiences trying to find a mentor. Again, how many of you think that having a mentor is important? Please give me a thumbs up. Oh, or make a star. I think let's switch the emojis and start making stars. If you think you can become a star by having a few mentors in your life, please give me a star. Lovely, lovely. Thank you. You guys are so sweet. Thank you so much, guys. So I want to take this opportunity to tell you guys about Metvy. So in fact, I mean, Metvy and Fampe are bringing a surprise giveaway for all of you, for everyone who's attending this seminar. Imagine learning live from mentors like me through 15 plus master classes and learning about the tricks of the trades of building a business. Imagine learning live from mentors working in the top management, senior level executives from Fortune 500 companies or brands like Google, YouTube, Flipkart, Nestle. You name the biggest brand and you have that mentor. Doesn't that sound like a dream? ये आपके लिए एक मेटवी फैम्पे के साथ अपॉर्चुनिटी ला रहा है. एक उनके सेशन में आपको, फॉर यू टू पार्टिसिपेट इन देयर सेशन, जिसमें वो सब कुछ सिखाएंगे राइट फ्रॉम द स्क्रैच. आई एम गोइंग टू बी वन ऑफ द मेंटर्स, और जितनी मैंने कंपनीज बोली सबके टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स आपको आके सिखाएंगे. It's going to be a month long program, 15 plus master classes. They will teach you everything, right from आप एक स्टार्टअप आइडिया कहाँ से जनरेट कर सकते हो, आप अपनी टीम कैसे हायर कर सकते हो, आप अपने को फाउंडर्स कैसे ढूंढ सकते हो, फाइनेंसेस आप कैसे अपने मास्टर कर सकते हो, अरेंज कैसे कर सकते हो. आप, द मोस्ट ट्रिकी पार्ट इज रेजिंग
funds from investors. How do you raise funds for your business? Everything from scratch is going to be covered in the masterclass, and all of this while working on a mock startup of your own. Best part, you can do it along with your school or college, since ये जितने भी सारे 15 मेंटरशिप सेशंस हैं, ये सब इवनिंग में स्केड्यूल कर रहे हैं हम लोग. So I mean, how about you spend your time wisely and start your entrepreneurial journey early. I mean, I'm 26 years right now, and people tell me, Vaibhav, you have an experience like a 35 or a 40-year-old guy. That's because मैंने अपनी life में बहुत early start करा. When I was 19, 20 years old. I think you guys are even going to be starting earlier than me. So you see, आप लोग अपनी लाइफ में कितनी आगे बढ़ जाओगे, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर इन टर्म्स ऑफ wisdom with respect to your age. And a couple of more things about this program is that Metvy and Fampe are also offering you a certificate and a letter of recommendation after you complete the course, and a chance. It's the best part, and a chance to apply and work with some of the best startups. Isn't that amazing? To learn from mentors from Google, Flipkart, Amazon, YouTube, every top business out there, every top brand out there. I am requesting Team Metvy to drop in a link in the comment section, because the best part is yet to come. इस लाइव कोर्स का ओरिजिनल प्राइस है 5499, लेकिन सिर्फ फैमपे की यूजर्स के लिए मेटवी हैज बीन काइंड इनफ to make it available at only 3499 for today. The offer is valid only by end of the day. It's a crazy discount. 3499 में मिल रहा है जो कोर्स 5499 का है. And I genuinely feel, working with Metvy, I feel it is a crazy price point. That's because with respect to the value that they provide. अगर मुझे अपने टाइम में ऐसे मेंटोर से सीखने का चांस मिलता, मैं ये चांस कभी भी ना छोड़ता. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इफ यू सर्च ऑन गूगल, अगर आपको एक दो और लेट्स से कंपनीज मिलती हैं जो आपको मेंटरशिप सेशंस दे रही है, एटलीस्ट प्राइस उनका 15-20,000 से कम नहीं है. एंड हियर एट मेटवी दे आर ब्रिंगिंग 15 mentors from different verticals. तो आप ये देखो ना कि for someone like me, I think I'm a marketing sales geek now. मेरे को marketing sales इतनी अच्छी आ गई है, considering Clapbox is available in all music stores pan India. मेरे को distribution के बारे में पता है. ऐसे ही for someone who's coming in from YouTube, he can really teach you so many things about how you can make your videos go viral on YouTube, with respect to your entrepreneurial journey. Let's say you make product based videos. Similarly, people coming in from Flipkart, they can really help you understand how e-commerce works. Let's say you have a business idea और आपको कुछ सीखना है e-commerce पे कैसे sell करना है. A mentor जो Flipkart से आएगा, वो आपको अपना business list करना, scale up करना, market करना सिखाएगा. And I mean, I'm 100% confident that this is going to be an excellent start to your entrepreneurial journey, and it will help you guys get to my level of success in a much shorter period of time. Don't waste your guys now. Live mentorship programs like these are usually 5 to 10 times more expensive. The offer is valid only by end of the day, and I hope to see you guys out there. So, I mean, I know मैंने अपनी journey के बारे में काफी कुछ बोल दिया. Now that I've told you about Metvy and how mentorship can really help you, let's spend the next few minutes talking a little bit about entrepreneurship. So, what's entrepreneurship? Let's keep it very simple. Entrepreneurship means making ideas very real. जब मैं 4th grade में था, तो मुझे शायद entrepreneurship के बारे में या businesses के बारे में नहीं पता था.
तो मैंने अपनी अंजू मैम को खड़े होके बोला था मुझे शॉपकीपर बनना है, बट आई रियली लाफ एट इट नाउ थिंकिंग ऑफ दोस डेज. Entrepreneurship means making ideas real. Imagine you have a cool idea for something you really love or something that could really help others. Now, entrepreneurship is like turning that awesome idea of yours into a real thing that people can use or enjoy. It's about taking the lead, being, let's say, a bit of an explorer and creating something new. Think of it like starting your own small business. Maybe you love making and selling handmade crafts, और मे बी आपको बेकिंग पसंद है, या आपकी के पास एक यूनिक सोल्यूशन है जो लोगों की लाइव्स बेटर कर सकती है, और समथिंग a unique solution to a problem that people face on a daily basis. That's where entrepreneurship and building businesses comes into the picture. It's turning these ideas, big or small, into something tangible, like a product or a service, and selling it out there. But it's not only about starting a business, it's a way of thinking. Entrepreneurs, I feel, are like inventors. They see things differently, finding opportunities where others might not be able to find an opportunity. It's about being curious, नए आइडियाज के साथ आना, और करेज होना, बीइंग ब्रेव इनफ टू ब्रिंग दोज आइडियाज टू लाइफ. आई थिंक करेज एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है एक अच्छा एंटरप्रेन्योर या एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए. अगर आप देखोगे तो एक लीप ऑफ फेथ लेना ही पड़ता है. वो एक, आई नो थोड़ा अनसर्टेनिटी फैक्टर आ रहा है, लेकिन अगर सब कुछ सर्टन हो तो यार मजा ही क्या लाइफ में. It is only and only these few risk takers that eventually, after being a little patient, make it really big out there. So, how do you identify opportunities? It can be as simple as finding opportunities just by looking around and noticing things that could be done better. कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, आई थिंक इसको ऐसा किया जा सकता है. यार ये प्रॉब्लम है जो मैं फेस करता हूँ, मेरा दोस्त फेस करता है, और हमारे सर्कल में कितने लोग फेस करते हैं, तो इसका मेरे पास एक सोल्यूशन है. आई थिंक सो. व्हाट डू वी डू एज एंटरप्रेन्योर्स? वी लुक फॉर प्रॉब्लम्स, फाइंड सॉल्यूशंस, एंड मोनेटाइज इट. दैट्स द entrepreneurship journey in a very small gist for you guys out there. So, uh, essentially, entrepreneurship is about being solving a problem. It starts with a problem, एक personal problem जो आप face कर रहे हो, and you're very curious or passionate about solving it. So I think entrepreneurs are like idea champions. But वो skill develop करना, it's it's a learning that you have to inculcate. It's a process, एक learning process होता है वो skill develop करना, जो again by finding the right set of mentors will really help you. So entrepreneurs look at things and turn them into chances for a positive change. It's about having a sharp eye for what could be improved and finding creative ways to make a difference out there in the society. How do you evaluate a business idea? How do you know अगर आपका आइडिया एक अच्छा है या एक्सेप्ट होगा मार्केट में या नहीं होगा? It's very important to have a clearly written down business plan. आपको ये पता होना चाहिए कि आप अभी कहाँ पर हो और आपको कहाँ पे पहुंचना है. Where is it that you are? Where is it that you want to be? And a clearly written down business plan will tell you how to bridge the gap between the two. आप कहाँ पर हो, आपको कहाँ पे पहुंचना है और कैसे पहुंचना है. आपकी लॉन्ग टर्म विजन क्या है, आपकी शॉर्ट टर्म विजन क्या है, आपकी फंडिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपका प्लान एग्जैक्टली क्लियरली रिटन डाउन प्लान एक होना चाहिए. पता है बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं एक बिजनेस बनाते टाइम. वो लोग ना, दे जस्ट गो ऑल इन, कि यार जोश में बोलते हैं ना होश खो देते हैं. दे गो ऑल इन कि यार ये तो आइडिया है, दिस इज ग्रेट, आई विल पुट वट एवर मनी आई हैव, जितना पैसा है मैं सब लगा देता हूँ, जितनी नॉलेज है जितना टाइम है सब लगा देता हूँ. विच इज ठीक है, इट इज वन अप्रोच, बट आई फील द बेस्ट अप्रोच इज टू
हैव अ पायलट रन, जिसे हम एक एमवीपी भी कहते हैं, कि यू नो एक टर्न योर आइडिया इनटू अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट before making everything perfect, before deploying all resources and going all in. Try a simple version of it first, है ना guys? Just 5 to 10 more minutes and I'll be very happy to take up questions with you guys. I'll have my team members at Metvy also to answer the questions for you. Just listen to uh, my idea of a true entrepreneur for the next 5 to 10 moments. So for an MVP, आई थिंक एक पायलट रन करना जरूरी है, एक पूरे प्रोडक्ट का या एक पूरी सर्विस का जो आप डिलीवर करना चाहते हो, एक सिंपल वर्जन बनाना चाहिए. इट्स लाइक टेस्टिंग योर आइडिया विद अ बेसिक वर्जन बाय डिप्लॉइंग little bit of resources. You learn from it and make it better as you go. How do you learn from it? By taking feedback from your customers. जैसे मैं अपनी स्टोरी में मैंने बताया कि मैं जब अपना काहन बिल्ड कर रहा था, हम एक एक प्रोटोटाइप बंच ऑफ म्यूजिशियंस को सेल कर रहे थे, आई एम सॉरी, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे उनसे फीडबैक लेने के लिए. जैसे जैसे हमको फीडबैक आ रहा था उनसे, हम लोग वो प्रोडक्ट इंप्रूव करते गए करते गए करते गए. एंड जब तक हमने 60 प्रोटोटाइप्स नहीं बना लिए, और जब तक वो परफेक्ट प्रोटोटाइप, परफेक्ट मॉडल रेडी नहीं था, हमने उसको जाकर पूरी मार्केट में म्यूजिक स्टोर्स को या Amazon, फ्लिपकार्ट पे बेचना स्टार्ट नहीं करा. We wanted something which was flawless. That's exactly what I'm talking about with respect to whatever business plan that you have in your mind, or whatever business ideas that you come up with while when you enroll for this masterclass with Metvy. दिस इस पूरे वर्कशॉप में आपको ये भी पता जाएगा कि आप आइडियाज कैसे लेके आए एक अच्छा बिजनेस बनाने के लिए. एक अच्छा बिजनेस आइडिया कैसे जनरेट कर सकते हैं आप कैसे, हाउ कैन यू थिंक ऑफ अ गुड बिजनेस आइडिया. वेल, उसके अलावा हमने प्रोडक्ट साइड की तो बात कर ली, बट अभी हमने इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करी. पता है, बहुत लोग फॉर्चुनेट होते हैं जिनकी फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है, जो वेल ऑफ होते हैं, हायर मिडिल क्लास ग्रुप से आते हैं, एंड हु कैन अफोर्ड टू फेल, जिनको फंडिंग रिक्वायरमेंट नहीं होती. बट इन लोगों के ना नंबर्स बहुत कम है. मेजरली पीपल लाइक यू एंड मी, आई हैड वेरी हम्बल बिगनिंग्स. हम लोगों को फंडिंग रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज्यादा. सो हाउ डू यू मेक अ पिच, एक पिच डेक इन्वेस्टर से फंड रेज करने के लिए कैसे बनाई जाए. वेल, इट इज अ वेरी शॉर्ट मास्टर क्लास टुडे, तो ज्यादा टाइम नहीं है, बट आई विल डेफिनेटली whenever we have more time, जब हम मेटवी का सेशन करेंगे, तो आई विल इंश्योर दैट वी डाइव डीप इनटू दिस एंड अंडरस्टैंड कि एक अच्छी पिच डेक कैसी बनाई जा सकती है. एक सीक्रेट, वो सीक्रेट क्या है किसी भी इन्वेस्टर से फंड्स रेज करने का, वी गोना dive into the detail because it's a very elaborate topic. Raising money is probably the most difficult aspect of a business. ये सब हम बहुत इन डेप्थ डिस्कस करेंगे. फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे. एक अच्छा, मेरे हिसाब से एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो है जो कि रिस्क को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, एंड फॉर दैट मैटर who's open to new ideas, new suggestions, and who's open to trying out new things. एक बोलते हैं ना पिवट करना. काफी बार क्या होता है कि जो आप ओरिजिनल आइडिया के साथ आए हो, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, इवन आफ्टर डेवलपिंग एन एमवीपी और एक शॉर्टर मार्केट पे वो अच्छे से टेस्ट आउट होने के बाद और एक उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने के बाद भी, इफ यू लॉन्च द प्रोडक्ट आउट देयर, दे आर स्टिल हियर एंड देयर चांसेस कि your business might not work out, you know. But again, you should know क्या आपका प्लान बी क्या है. Are you ready to pivot? Are you ready to maybe remain in the same industry but slightly tweak your idea, slightly tweak your business plan to better your offering or there out there or not?
That's again another thing that we're going to be talking about at the mentorship sessions with Metvy. And I wish we could speak a little bit more about entrepreneurship, businesses, about e-commerce right now. But again, that's I mean, I think I would have to end the session here because मेरे को अभी आपके questions का answer भी करना है. So let's just dive into the questions that you guys have for me right now. Okay. So we just have a question from Krish in the chat box. He's asking like how to like अपने जो idea है उसका demand कैसे निकालें, like is this idea really in demand in the market or not? That's a very appropriate question. यार एक ना market research करनी बहुत जरूरी होती है. I'll tell you what, Krish. मेरे जो फर्स्ट टू बिजनेसेस फेल हुए थे ना एट द एज ऑफ 18 एंड 19, वो ऐसे ही फेल हुई थी क्योंकि मेरी मार्केट रिसर्च अच्छी नहीं थी. मैंने 2 साल अपने वेस्ट करे हैं. 1.5 years I wasted on those two businesses. खैर वेस्ट तो नहीं कैसे, because I think you always learn out of your failures, but because my market research was not that good, I could not test. I did not know how to test my product out there. So essentially, it's about taking feedback for your product, doing a small um, market test of your idea. That can really help. But again, Krish, I wish मैं अभी आपको बहुत डिटेल में बता सकता, but I hope मैं आपको मास्टर क्लास में जब मिलूंगा तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा कि आप की मार्केट रिसर्च कैसे आप कर सकते हो, and how you can ensure that your product is just going to flourish out there, or for that matter your service is just going to flourish out there. Got it. Thank you for the amazing answer, Vaibhav. We have one more question, that how do you get the funding for the first round of prototypes? uh, Again, I think ये मैंने towards the end of the session बोला था, it's a very very elaborate discussion. There are a lot of VCs, a lot of angel investors out there who can really help you fund your business. But then again, how do you create a pitch deck for them? How do you reach out to them? Again, with Metvy, the best part is that we are going to, in some way or the other, really help you get in touch with these mentors, get in touch with the network of these mentors, which includes a lot of investors and a lot of VCs and angel investors. थोड़ा सा ये इलेबोरेट आंसर है, काफी इलेबोरेट आंसर है, क्योंकि फंडिंग मिलना सबसे मुश्किल प्रोसेस है एक बिजनेस बिल्ड करने में. आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू आंसर इट राइट नाउ, बट definitely if you join the session at Metvy, we are going to teach you that in detail. Perfect. And we just have the, I guess it's the last question for the day. Firstly, thank you so much for the amazing session. So it's a follow-up Thank question you. from Krish, that how to do market research and app-based startup. So I mean, इस क्वेश्चन को ना हम बहुत सारे फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. हाउ डू यू डू अ मार्केट रिसर्च फॉर एन ऐप बेस्ड स्टार्टअप? पहली बात तो वो ऐप किस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है. इज इट लाइक a fintech app? Is it like a game that you're creating? Is it like a service based app like let's say Swiggy or Zomato? फिर आपको ऐप, जब आप ऐप बनाओगे तो आपको ऐप कितने किस लेवल तक बनानी है जहां पे आप अपना उस MVP को टेस्ट आउट कर सको. दैट्स अनदर क्वेश्चन दैट वी हैव टू लुक एट, राइट? देन आपको कितने नंबर ऑफ लोगों को वो ऐप लेट्स से डाउनलोड करवा के उनसे चेक करवानी है. सी, बिल्डिंग एन ऐप साउंड्स लाइक इट्स वेरी इजी. श्योर इट कैन बी इजी, बट उसके लिए जो स्किल सेट चाहिए ना, नॉट बिल्डिंग एन ऐप, बिल्डिंग बी गेटिंग एन ऐप बिल्ट ऑल्सो फॉर दैट मैटर. जो उसके पीछे आइडिया है, उसको मार्केट कैसे करना है, it's a technical process. And I mean, there's a lot of things that goes on to testing how, for that matter, app based हो या कोई website based आप product निकाल रहे हो, सबका एक अलग अलग तरीका होता है उसको चेक करने का. So
हम लोग मेटवी में ना, वी आर ऑल्सो गोना हैव अ पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन अबाउट दिस. सो मे बी इफ यू वांट टू डेवलप एन ऐप, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू कि आपको क्या अप्रोच लेनी चाहिए एक ऐप को मार्केट रिसर्च देखने में, कि क्या वो वर्कआउट करेगी या नहीं करेगी, क्या उसमें ग्लिच आ रहा है नहीं आ रहा, आर पीपल डाउनलोडिंग इट, मेरे को कितने रिसोर्सेज डिप्लॉय करने हैं एक एमवीपी बनाने के लिए. Got it. Okay, you have to trust me. It's the last question now for the day. नो So प्रॉब्लम. people want to know आपने कौन सी स्किल सीखी थी? यार, टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर आपको एक स्किल नहीं सीखनी होती, दो भी नहीं सीखनी होती, पांच भी नहीं सीखनी होती, आपको 100 स्किल सीखनी होती हैं. You know, there are days where my let's say at the ground level, I've worked at the ground level. मतलब मैंने वो स्किल भी सीखी कि प्रोडक्ट को पैक कैसे करते हैं, और मैंने वो स्किल भी सीखी कि फंडिंग कैसे रेज करते हैं, मैंने वो स्किल भी सीखी कि प्रोडक्ट को वायरल कैसे करना है अमेजोन पे. अगर आप अमेजोन पे जाके काहन टाइप करोगे तो आपको दिखेंगे हजारों रिव्यूज हैं, हमारे सामने बेस्ट सेलर टैग है. I've learned I've learned all those skills. I think for becoming an entrepreneur, you have to learn a lot of things with respect to all industries. आपको सारी industries, I'm sorry, आपको, let's say मैं एक entrepreneur हूँ, मेरे अंडर 10 टीम्स हैं. एक टीम है सोशल मीडिया की, एक टीम है जो ई कॉमर्स संभालती है, एक टीम है सेल्स, एक टीम है मार्केटिंग. आई एम सपोज टू नो at least a little bit about everything. It's not humanly possible to learn everything about everything, but for your team members to be answerable to you and for you to give them a way forward, it's important, it's very imperative for you to know, to acquire all these skills at some level. Again, आपको लगेगा मैं बहुत ज्यादा हार्ड सेल कर रहा हूँ प्रोडक्ट, बट you know what is the beauty of these cohorts at Metvy? YouTube वाला आएगा, एक one mentor from YouTube will come, he'll tell you about social media. One mentor will come from Flipkart, he'll teach you about e-commerce. One mentor will come from some different background, he'll tell you his best of skills that he acquired in that particular industry in no time. So मैंने बहुत सारी स्किल सीखे हैं यार, मैंने सब स्किल सीखी है. Amazing. Thank you so much for wonderful answers, Vaibhav, and thank you so much for sparing your time for the session. It was really wonderful. And in case you guys want to attend more such sessions like this and actually work on practical tasks, get a certificate certified by Metvy, incubated at IIM Bangalore, and actually just want to earn these skills and understand how this works, would love to see you there in the Metvy's program super soon. I hope you already got the link. So thank you so much, everyone, for joining in, and thank you so much, Vaibhav, once again for your valuable time. Thank you everyone. I'll see you soon. All right. Thank you so much, Bye. everyone, for joining in. Have a nice evening.